Now, I would like to call Dr. Mayura ma'am for introductory speech. Good morning, everyone. Firstly, I pay my humble homage to our founder president, Sri Shivaji Education Society Amravati, Dr. Panjabrao alias Bhausaheb Deshmukh. Welcome to Remote Sensing Day and also Youth Day. आज नॅशनल रिमोट सेन्सिंग डे सुद्धा आहे आणि नॅशनल यूथ दिवस सुद्धा आहे. Today we celebrate both days. Today we celebrate Remote Sensing Day. We celebrate the power of remote sensing in transforming our understanding of the world. We will explore last advancement, innovations and applications in remote sensing, addressing pressing challenges like climate change, natural resource management and disaster response. As a head, I am committed to advancing remote sensing. Let's work together to harness its potential for better future. Let's celebrate achievements, innovations, and possibilities. I welcome today's guest, Dr. Pranay Divte sir, and he give lectures on applications of remote sensing and GIS. तर आज आपल्याला रिमोट सेन्सिंग आणि यूथ डे दोन्ही सेलिब्रेट करतो आहे आणि दोन्ही दिवसाच्या तुमच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू. Thank you, ma'am. Now, about the successive journey of Dr. Pranay Divte sir. Dr. Pranay Divte is an assistant professor in the Department of Geology at the School of Basic and Applied Sciences, MGM University, Chhatrapati Sambhajinagar. He holds a PhD in Geology awarded in 2020 with a thesis titled Holocene Paleoclimate Record from Renuka Lake, Himachal Pradesh, India, from Wadia Institute of Himalaya Geology. Now, his academic journey includes being a gold medalist in MSc Geology from the Institute of Science, Aurangabad, Maharashtra. Dr. Divte also sanctioned 20 lakhs in tidal assessment of heavy metal pollution from major cities of Maharashtra, source identification, ecological risk from Science and Engineering Research Board under the Startup Research Grant. Also awarded 2 seed money projects from MGM University for a total amount of 5,15,000 rupees. Dr. Divte technical expertise involves the analysis of various samples for grain size, clay mineralogy, diatoms, total organic carbon, environmental magnetism, and geochemistry. He was worked extensively with instruments such as Master Sizer 2000, X-ray diffractometer, SSM 5000A, MS2B, and MAT 253 plus during his PhD studies. His research interests span paleoclimatology, environmental geology, applications of remote sensing in water resources management. Dr. Divte has authored more than 25 publications, including research articles, book chapters, and books, contributing significantly to the understanding of past climate variations and environmental changes. Additionally, he has undertaken various administrative responsibilities, demonstrating strong leadership and organizational skills. अभी देखिए, डॉक्टर प्रणय दिवटे सर मेरे एक बहुत अच्छे गाइड रहे हैं और साथ ही हमेशा हर स्टूडेंट को ये हेल्प करते हैं. मेन बात ये है कि ड्यूरिंग द बीएससी सर ने अपना बीएससी सिकना कॉलेज से कंप्लीट किया है. देन सर ने अपना मास्टर डिग्री औरंगाबाद से कंप्लीट किया है और सर एकलासपुर ऐसे छोटे से विलेज से बिलोंग करते हैं जहां स्टूडेंट्स को जियोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं था. उस समय में सर ने बीएससी जियोलॉजी में एडमिशन लिया था और आज सर ने इस फील्ड में जियोलॉजी फील्ड में बहुत ही बड़ा नाम रोशन किया है.
तो सभी बच्चों को, जो भी छोटे मोटे गांव से आते हैं, इनको बहुत ही प्रेरणा देने वाले हमारे प्रणय दिवटे सर आज आपके सामने हैं। सर ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। हर हर दिन उनके लाइफ के बहुत ही कठिनाई से उन्होंने जिए हैं, लेकिन आज का समय एक सब्जेक्ट के साथ जुड़े हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मैं सर को आमंत्रित करता हूँ कि सर ने आज नेशनल रिमोट सेंसिंग डे के ऊपर जो गेस्ट लेक्चर हमने अरेंज किया है, उसको स्टार्ट करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, Karthik sir, for giving this introduction. As I am a part of this district, or I am a person who is belong to this district, so I don't need this introduction. But anyway, thank you very much for giving me chance to present here. I am Dr. Pranay Dute, working as an assistant professor, and today I am here for giving the presentation on the occasion of National Remote Sensing Day. So first of all, I am purely having a geology degree, and all the lecturer with you is of very good friends of mine, right from the Karthik sir, Kadu sir, then Paunikar sir and ma'am, Deshmukh ma'am, all is having a very good healthy relationship, academic, and all this coordination is with among all them. So it's very pleasure and nice to having on a platform for discussion about the remote sensing and GIS, because nowadays we know that remote sensing and GIS, and as you know that not only the remote sensing GIS, but technology has been taken a very key role in any of the understanding of the subject, like physics, chemistry, and all the subjects is having a technological advancement. So you can take the example of Nokia. If you are not up to date with the technology, you are not up to date with your advancement in the subject or any of the things, like if you are doing the businesses and all this one, if you are not using the phone pay today, you cannot having the business what the others having who the using the person phone pay. So like that, remote sensing and GIS is used by geologists in a, if you able to use GIS and remote sensing in a smart way, so you can stay and you can very much successful in the field of geology as well as geoinformatics. So today we celebrated National Remote Sensing Day in the because of the Dr. Vikram Sarabhai birth, who is the considered as the father of your father of the Indian space program. So the birth date of Dr. Vikram Sarabhai is 12th August 1990, and we are celebrated as a National Remote Sensing Day because our space program and all this one is need some, what we can say, the some pushing from the person. So he is the one who take our space program and all this one in a new height. So I pay tribute to the Dr. Vikram Sarabhai for his birth anniversary, and going to start today's lecture. Thank you all for inviting me here and giving me chance to talk with the student. I hope a student can enjoy this lecture. I would like to start my lecture with the basics, and then we can go with the some application part with the some research paper and all this one. So thank you all again for giving this chance. Please let me know when my slide is visible or not. Just a minute. Yes, it's visible now. Yes, sir. Okay. Please let me know if there is some problem in voice or if the slide is not visible. So today's topic is basic of remote sensing. Yes, ma'am. Yes, sir. Please continue. Okay. So today we are going to start with the lecture of basics of remote sensing, GIS, and its application. So as I already talked about that, we are a person. I am a person basically with the
background of geology, then come into the remote sensing up to 2020 when I did my PhD. It's basically I did my PhD in geology only. Then when I come to the university system for a teaching and all these researches, so what I saw that many of the researcher from the outside India and as well as in the top institution of India, they mostly use the technological advancement like data from the satellite and all this one to validate, to proofread their research in the subject of geology. So that time I think that I should also learn this thing because during my PG time and that I just know the basics and all these things. So I used to learn from the YouTube and some lectures from the ISRO and all this EduSet program. So I used to learn all this from that, and then working on some software and working with some paper. So the knowledge and some understanding of this GIS and remote sensing get enhanced. So basically, I'm a geologist. Then come to the geoinformatics. That's what the introduction I would like to give you all. So what is the scientific data? Whenever we are going to use the term data collection, okay, so data collection can be done either two way, in situ or remotely. So if you are going for the some I will give the example of the water analysis. Okay, so if you want to go for the water analysis, there is a Chhatri Talao and all these lakes in Amravati. So if you want to take sample from Chhatri Talao, there is a two way you can take the reading or you can take the measurement. One is in situ, which is very profound and used earlier by the researcher, and it is a conventional method, we can say. So it is having a very good accurate result, and all these things, all the result and all the things has been very good with the in situ measurement. The problem comes there when there is some logistic barrier. Okay, when you are going to into the some of the terrain like where there is no roads, there is a problem of oxygen, like when you are going into the mountain and all this one. So therefore you need sometime a remotely sensed data. Okay, that is a remote data. Okay, so remote data is nothing but the a data which can be taken without actual physical contact with that data set or that physical object. Okay, so that is a remotely sensed data. So when we are seeing the remote sensing, so remote sensing, remote means observation from the distance, sensing is a detection. So these two words will combinedly form the definition of remote sensing. So remote sensing is the obtaining information about the object, area, phenomena through the analysis of data acquired by the device that is not contact with the object, area or phenomena under investigation. That is a definition. Maybe there is a different definition by the different person, but more or less the thing you need to remember about the remote sensing is the science and art, because you can see the why it is coming as a science and art. You can see the different subject like chemistry, physics and all this one, which is not means you cannot see these two subject together. So either they can see the science or art. So it is a science and art, it is mentioned because you can see this subject in BA geography and all this one, GIS as one of the subject, GIS and remote sensing, and you can see into the sciences also. Sometime in some of the universities like in IRS also, they can have the facility to undertake the BA geography student to the MSc and all this one, because it is a the subject required some knowledge of the art as well as some scientific investigation, and scientific technical investigation is also required by the remote sensing person. So it is a science and art obtaining information about an object. So it may be the where you taken the information, it may be a some of the object, it may be a some of the area specific and some of the phenomena. So these three different type of study can be taken out by the remote sensing, and after this information you can go for the analysis of that data which is acquired by the device which is not contact with that object. So if you have some like what example I have given, that if you want to take the
pH of the Chhatri Talao, you have one option that you can have to go there and take on the sample and go for the analysis in the lab. Otherwise, you can go with the pH meter, and they have the pH meter will be taken the pH of that particular sample. I recently visited to the Chhatri Talao. That is not in a good condition actually. Chhatri and one of the other, I think, Wadadi Lake, under my project, which is sanctioned by Government of India to assess the condition of the lakes in the Maharashtra. So, if you want to go with the pH meter, that is not a remote sensing. Yes, if you are taken this all the reading from the satellite image, or not the satellite image, but by the drone cameras and all this one, and if you are going into the analyze and taken the some of the result, then it is considered as a remote sensing. Means remote sensing, basically the concept of remote sensing is when you are taken the any of the analysis or any of the result of the things without actual contact, without physical contact with them, is a remote sensing. So this is an example what you can see that right now you are seeing this lecture on your presenter, whatever the seminar, seminar hall. Maybe there is some projector and you can see all this one by your naked eyes. So now this process is also called as a remote sensing, because to get my whatever the knowledge, okay, to get this knowledge of remote sensing and this lecture, you are not coming and touching me and taking the knowledge, okay, you are simply seeing this presentation and acquiring the knowledge. So this is also a part of the remote sensing process. So this is called as a natural remote sensing. This is called as a natural remote sensing, when your eye is a natural sensor which can acquire the knowledge about, or you can see of the any of the building or whatever the process you can see by your naked eyes without physical contact. If you are going to acquire some knowledge, that is a natural remote sensing. Artificial remote sensing, a different part. When the artificial remote sensing is a remote sensing when you are going to apply some of the like energy, like radar and all this one, when you are going to apply some of the satellite and all this artificial thing. So then this artificial remote sensing is defined as a remote sensing where artificial things like sensor, like satellite and all this one is get used by the process is known as artificial remote sensing. Whereas natural remote sensing, natural things can be used like man and all the our natural sensor and all this one. So that is a different remote sensing, natural and artificial. Hope you understand this one. Now we come to know about what is remote sensing, natural and artificial remote sensing. Now why we are going to study the remote sensing? So remote sensing is nowadays used by everyone, by every subject and all this one. So what is the advantage of this remote sensing? What is the advantage of remote sensing? So remote sensing having the advantage that it can useful for systematic data collection. So what is the systematic data collection? Like if you want to do a sampling for like from Amravati to Chandur Railway, or for the Amravati city itself. So if you want to have the data set like you want every meter data for the elevation. So for the man-made, for manually, it is a very hard to go for this systematic data. Like by every 1 meter, you cannot having the surface which is exposed to the satellite or which is exposed to you. So maybe by doing with the satellite image, what is satellite image will give you the one frame of the data set which cover entire Amravati city, and then you can do with the any of the analysis, any of the like elevation also systematically. Means by if you want to go with the 3 meter 4 meter, you can play with the same data set. So that is what the systematic data collection means. If you want to go for the systematic data collection, you require the remote sensing data. Then information about 3 dimension of real object.
So you can have some 3D images. You can have the some of the images with their lat, long, altitude. All this information can be achieved, can be taken out from the your remote sensing data set. Then repeatability. So repeatability is just like we can say that temporal resolution and all this one. So repeatability is nothing just about the like you required sometime a data set like there is a dam, maybe you heard about the Simbora Dam, okay, which is in Morshi, I think, somewhere near to Morshi. You may heard about the Simbora Dam. So I would like to go for the a daily fluctuation in the water in the Simbora Dam. So it's not possible to go there daily or employ one of the person to go and see there to take the fluctuation, all this one. So here remote sensing data set is useful because there is a satellite is orbiting around the earth and they are taking the your photograph continuously. Okay, so you need, if you need a data set for a daily, if you need by 3 days, or if you need by your option, your choice, so satellite will give you the data set after every 3 day, every week and all, whatever you need. So repeatability is one of the advantage of remote sensing. Then the most important, a global coverage. So you cannot say that, sir, I am from the some of the area like Melghat and I am don't have a facility to go there and study these things and all this one. If you want to take on the area of Himalaya, or if you want to want to study in any of the city, like if you want to go in South Africa and study the Kimberlite formation and all this one, so you can say that, sir, no, I don't have a visa, I don't have a facility to go there, I don't have a passport and all this one. So this can be overcome by the remote sensing. You can have the satellite image of the any of the area of the earth. Expect some like area where military operation and all this one is, which is considered as a restricted part, but more than 95% of the globe is available on the remote sensing. So global coverage is also one of the important advantage of remote sensing. Then the next part is the only solution sometime for the otherwise inaccessible areas. So the only solution sometime it's maybe yes, you can also understand as you know that some of the area in Melghat also which is not permittable, which is not you have to take the lots of permission to go there because this is a tiger reserve. If you want to go and study in a Semado about the lithology, geology, or any of the forest cover or whatever you want to study, different kind of study has been taken out by the different researchers. So they are maybe a different objective. So if you want to go and study into the this Melghat, so I will give you the example of Melghat, but Melghat is not that much of inaccessible. If you want to go in the area like Himalaya, where the temperature is get suddenly drop down, and you are not going to stay there for a day or for a night, because the temperature as well as the oxygen level and all this one is not suitable for the, because if you know about the glacial in Himalaya we have a glacial. So Wadia Institute of Himalayan Geology, Geological Survey of India, and the many of the agencies is working since the last 100 years about the glacial. But what they say that we are only get capture or only study less than 10% of the glacier. So 90% of the glacier is not covered, not studied yet because of their inaccessibility. So this inaccessibility can be overcome by the remote sensing, because you have a satellite data for the same that region, the glacial region, and that region can be explored by the remote sensing. So this is all are the advantage of remote sensing.
and which can be very much useful for the, and it is a multi-purpose information, like when we are going to see next some slides. So they have different bands, so different bands can be used for the different purposes, like for the water there is a different band, for the forest vegetation there is a different band. So with the single image downloaded from the Earth Explorer or some ISRO website, the same image can be used for the different purposes. Like you can taken out the vegetation information of the area with the same image. You can taken out the water availability of that area from the same image. That is the multi-purpose information. Okay. So this is some of the remote sensor we can already come to know about the that you are seeing this presentation is a, your eyes act as a sensor. So this is some of the remote sensor. Now the important about when you are going to study the basics of remote sensing, the component of remote sensing is a very fundamental and very important, as well as if you having the understanding of this concept, you can go with the some advantage part or some advanced part with the remote sensing. So this is a component of remote sensing. So maybe you if you are going into the study the computer science subject, maybe MSc IT, and also you have some hardware, software, and all this phenomena of computer. Likewise, in a remote sensing, the component of remote sensing start, you can start with the energy source. So you may know that source of the energy for all of us is sun, which is the ultimate energy source, which can be used for remote sensing purpose, as well as some our day-to-day life will be can be enjoy with energy radiation. So energy source is the sun. You know that with the collision of helium and hydrogen, all these phenomena can be taken out on a sun, and then we get the radiation from the same. So when the sun energy is coming to the uh, our earth, it has a pathway like atmosphere. In atmosphere also, you know that there is a different window, like right from the troposphere, stratosphere, ionosphere, exosphere, that all are the layers which can be useful or which can be taken out as a path for this radiation to come on the earth. So energy from the earth is earth, all the different parts of the earth can take the energy from the same source, so they get reflected to the back to the earth atmosphere. Okay, so they get reflected back to the atmosphere. So you may know there is a different type of reflection, refraction, and all these phenomena. So it simply get reflected back, just like if you are taken out the example of the mirror and all this one, or if you take the any of the example, when you are going to torch the light in front of the mirror and all this one, you can see that they get reflected back. If you torch the light in front of the some of the other object, sometime it get refracted, sometime it get transferred to the another side. So it is a different part of, so we are not going into that one. So you can just imagine, or you can just understand that it gets reflected back to the atmosphere. In atmosphere, you may know that there is a satellite which is already been object by the some of the countries, the US. These all are the countries primarily send a satellite. Then later on, the Indian satellite is also having a very good frequency and very good quantity in earth atmosphere. So all the sensor are placed in the atmosphere with the satellite. So that sensor can sense the reflected energy by the your targeted area. So how you can understand this phenomena? Like if you have a water bodies, okay, if you have water bodies, you can have a different radiation, different energy which is reflected from the water body. Okay, if you have a vegetation, you have a different reflected energy from the vegetation. If you have a land, you can have a different reflected energy into the sensor.
So sensor catch this all the reflected radiation from the earth, which is commenced from the sun. So sun through radiation through atmosphere, it is come to the targeted area like earth. Then from the earth, it is reversed back to the earth atmospheres where your sensor and all this one is get placed. And after this one, after the sensor, it get acquired by the sensor, and sensor will send this energy to the ground acquisition centers or receivers, we can say, where it is posted into the country where it can be operated. So maybe in US or all this one where it is get operated, they have their station, ground station, and that ground station, whatever the information which is captured by the sensor, their ground acquisition center will transfer this information into the our server. Then server will do the analysis, transfer this signal into the image. Finally, as a client, or you can say you are the end user of this all, you can get the information in the form of image with the different bands. So this is all about the component of remote sensing. So remote sensing component start with the energy source coming with the radiation in the with the atmospheric window to the targeted area. Targeted area may have a variation in their energy exchange because of the targeted area is not having a same feature, like sometime it is having a water, sometime it is having a vegetation, sometime it is having a land. So they will be get reflected back depending upon their energy radiation reflection parameter. So after the sensor can take your all the energy in terms of their radiation, it is sensor will transfer the energy into the your ground acquisition centers or receiver, and then ground acquisition center receiver will transfer your energy into the your what we can say the server, and server will automatically given you the as an image. So if you want this image, you have to go to the website of that particular uh, country, website of that particular agency, like one of the agency which is very famous and having the very reach what we can say the reach their storage of the images like USGS, United States of Geological Survey. Then you have ISRO also. ISRO is having also. Then your European Space Agency is also having a very good data set, and Russia and all this one. So this all are the having their website. So you have to download the data from their website. So this is what the component of remote sensing. Now, after having the knowledge of the component of the remote sensing, you should have some basic idea about the EMR, like electromagnetic radiation. So when we are study the electromagnetic radiation, you need to know about that sun is the main source of our energy, and the energy which is propagate from the your sun to the earth, it is in the form of your your form of waves. Okay, so there is a term like wavelength and frequency. Wavelength and frequency. So so the what is the wavelength and what is the frequency? You may have this knowledge in a 12th plus 2 maybe आपने पढ़ा होगा ये सब. So you can see here, maybe my cursor is visible there. So from because your energy is going into the waves, so it may form a crust and trough. Okay, like this one. You can see this red one, crust and trough, crust and trough. So when it is formed the crust and trough, the distance between two trough, is known as wavelength. Is known as wavelength. Whereas when you are in a one single point or one position, the number of wavelength passing through that single point in that particular time
is known as frequency. So this is the two different phenomena which you need to understand into the remote sensing process: frequency and wavelength. So frequency and wavelength. So sometimes the wavelength of the some of the your radiation is having a longer wavelength, so you use that data for a different purpose. Sometimes you required a shorter wavelength, you use that data set for a different purpose. So frequency and wavelength dependency on the data set means the data set is differ with the wavelength and frequency. We are divided that onto the different name of like gamma and all this, alpha, beta, gamma, visible, and all this spectrum. So this is what the spectrum, like light energy is explained as a EMR, can be classified according to their length of the wave. So you can see this human eye can only measure the visible light, but it is not like that. Only the visible light is means whatever you can see in a, by the visible spectrum is only available things in a Earth surface, in the atmosphere. May you know about that. Your X-ray is also you can see the X-ray is having some different wavelength. Your FM, AM, whatever things, they are having a different wavelength. They are having a higher wavelength, whereas gamma rays, X-rays, and this ultraviolet rays is having a relatively shorter wavelength. So depending upon the wavelength, you have used a different data set for a different purpose. So what the human eyes can only see by the visible light spectrum. Okay, it is a visible light spectrum. So it is from the 400 nanometer to 700 nanometer. So we can see only a very short or we can see only a very limited part of the spectra which is available on Earth. That's why you can see that sometime in between you and the other object there is a lots of dust particle and all this one, but you cannot see that one. If you are talking with the some of the person, or if you are having a FM at your home or mobile, so that mobile network is coming by the satellite to the your mobile network by the some longer wavelength, but you cannot see because your wavelength of the eye cannot allow you to see the finer wavelength also and the larger wavelength also, because you have a limited visibility of your eyes to see that wavelength. Okay, so our visible length is like what we are discussed, that from 400 nanometer to the 700 nanometer. So this is a different color what we are seeing by the naked eyes, like from the violet, blue, green, yellow, orange, and red. So this color is having a different wavelength, different wavelength. So what when we are using the remote sensing data set, so you this wavelength, different wavelength is having a different bands. This different wavelength is having a different bands. So when you are going to having the want to study the vegetation, you only required a green color band. So that's how it working. Okay, so this is different, like what we see the visible range. Now it is a infrared. Okay, infrared range. So likewise there is a different ranges. So infrared region can be divided into two categories: reflected and thermal IR. So thermal remote sensing also been used by this infrared range. In thermal remote sensing, mostly what you can use is whatever the radiation, a thermal radiation which is emitted by the earth. Okay, a thermal, or what we can thermal itself or suggest you that it is about a temperature. Okay, so thermal remote sensing is use this infrared region, like when you are going to see the some of the energy radiation from the earth, thermal IR can be captured this energy. Then microwave region. So the portion of the spectrum more recent interest is remote sensing in the microwave region. It is from 1 mm to 1 meter. So this cover the longest wavelength used for the remote sensing. So microwave range is used for the because it is having the highest, like जो इधर वाला spectrum है जो, that is a higher one. So that is used for the this microwave range. So what is the use of this microwave range? Because each and every spectrum is having a different use. So if when you are going to study
the flood phenomena. Recently, in Pune, you can have the flood. Every year we can have the flood. My papers is there in the flood. You can read those flood papers, how we through the satellite image study this flood and all this one. So obviously optical data which is used by remote sensing very means in a high percentage cannot be used while you can use this in a flood region, because obviously जब flood आएगा, okay, when there is a flood you definitely having the cloud. So when you have a cloud cover more than 10 to 20%, you cannot use that data. So that data set is you need to correct. About 10% के नीचे अगर होता है तो you can correct, but after 10-20 data can be corrected, can be rectified, but not use that much, और वो इतना अच्छे से आपका यूज नहीं होता है. Therefore you need this microwave range, because ये आर पार चला जाता है आपके क्लाउड के भी, so that you can have the data set of that particular. Like मुझे अभी पुणे का देखना है. पुणे में मुझे लगता है 15-20 दिन हुए, बहुत बारिश थी और एवरीथिंग इज अंडर द फ्लडेड एरिया. तो मुझे देखना है कि लाइक आई एम द पर्सन फ्रॉम द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मुझे सबको मदद देनी है कि किसका कितना नुकसान हुआ. अब मैं पूछूंगा लोगों से तो लोग तो बोलेंगे कि नहीं 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 मेरा भी एक घर था, ठीक है ना, वो बह के चला गया. कोई बोलेगा कि अरे नहीं नहीं मेरे तो 3 BHK के 10 मंजिला वो था, फ्लैट था, वो बह के चला गया, ठीक है ना. So everyone can be argue with the anyone. So for this one you need to study. So आप अगर आपको आफ्टर द फ्लडिंग आपको स्टडी करना है, अब वो फ्लड के बाद तो आपके पास कुछ बचा नहीं है वहां पे दिखाने के लिए और देखने के लिए और कुछ एनालिसिस करने के लिए. वो तो सब उसका बह के चला गया रिवर में. स्पेशली द प्लेसेस वेयर यू कैन हैव द रिवर, ठीक है ना, रिवर के आसपास ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है कि सब बह के चला जाता है इन द बैंक ऑफ द रिवर. So आपके पास तो कुछ है नहीं. So that time you can use the remote sensing data of the previous date. आपका और दिन तो चला गया लेकिन आपके पास उस डेट की इमेज है. अब इमेज है आपके पास, लेकिन the optical images, optical remote sensing data set cannot be used because cloud उसकी एक लिमिटेशन है. उसकी एक लिमिटेशन ये है कि वो क्लाउड को आर पार नहीं करता है, ठीक है, वो क्लाउड को आर पार नहीं करता है. तो क्लाउड को आर पार नहीं करता है तो क्या होगा, आपका वो डेटा सेट आपको उस दिन का मिलेगा नहीं. अब ऑब्वियस है फ्लड आया तो फ्लड डायरेक्ट तो आसमान से गिरा नहीं होगा, वो क्लाउड के थ्रू ही आया होगा. तो फ्लड है तो क्लाउड है. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ लिमिटेशन व्हाइल स्टडीइंग द फ्लडिंग दैट इन रिमोट सेंसिंग. आपको उसके 1-2 दिन के बाद का लेना पड़ेगा. अब 1-2 दिन के बाद का लेंगे आप तो फ्लड तो कम हो गया, ठीक है ना, फ्लड तो कम हो गया. आपको ना वाटर लेवल देखिए देखते आएगी ना तो बाकी कुछ देखा आएगा. So you need the data set of that particular date. So for that one microwave range is available. So microwave range क्या करेगी, आर पार जाएगी आपके इसके क्लाउड के. So there is a no limitation of the cloud. So that data you can use for this reason. So that is having a higher wavelength. You may understand. So this is a chart of electromagnetic spectrum where and what you have used about means किस स्पेक्ट्रम में क्या क्या है ये आपको उसमें दिख जाएगा. ओके. सो आपका मैंने जैसे बताया आपको कि आपकी एक्सरे जो है उसका अलग स्पेक्ट्रम है आपका. जैसे आपको बताया माइक्रोवेव है, मोबाइल फोन है, उसका कुछ अलग स्पेक्ट्रम है. ये जो चीजें आप यूज करते हैं इसके अलग अलग स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना. जैसे रेडियो स्पेक्ट्रम में आपका FM, AM, अल्ट्रासाउंड रेज, साउंड वेव्स, जो डिवाइस है मोबाइल है माइक्रोवेव में चलती है. आपका टेरागेट्स में आपका अलग कुछ चलता है, बायो इमेजिंग वगैरह स्क्रीनिंग जो आप करते हैं. देन एक्सरे आप निकालते हैं उसकी अलग रेंज है. सो दैट इज ऑल दिस थिंग. आपकी विजिबल जो है, आपकी जो सेंसिंग है वो इतनी विजिबल तक है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर दिस वन इज अ अर्थ ऑब्जर्वेशन सेंसर एंड प्लेटफॉर्म. सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट रिमोट सेंसिंग. नाउ हमने रिमोट सेंसिंग देखा, उसका कंपोनेंट देखा, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखे किस किस स्पेक्ट्रम में वो काम करता है. नाउ नेक्स्ट वन इज अ सेंसर एंड प्लेटफॉर्म. सो आप जब भी आपको कोई भी
रिकॉर्ड करना है चीजों को, तो आपको दो चीजें जरूर चाहिए। वो चीजें है सेंसर एंड प्लेटफॉर्म। सो सेंसर इज अ डिवाइस दैट रिकॉर्ड द ईएम एनर्जी। जैसे आपकी आंखें है, ये सेंसर है, और प्लेटफॉर्म क्या है, आप खुद हो, वो प्लेटफॉर्म है आपका। सो प्लेटफॉर्म इज अ कैरियर बेड अवे टू कैरी द सेंसर, ठीक है ना। जैसे आपका हेड है, वो आपका कैरियर है एक, ठीक है, आप खुद ही एक प्लेटफॉर्म हो, तो वो कैरी करता है आपके सेंसर को। सो सेंसर एंड प्लेटफॉर्म आर यूज टू क्रिएट इमेज डेटा ऑफ द दिस वन। तो ये दोनों चीजें आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, जो कि सैटेलाइट में होती है। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू सी द हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग, जब पहला फोटोग्राफ लिया गया था 1827 में, तभी से आप टेक्निकली देखा जाए तो रिमोट सेंसिंग स्टार्ट हुई, क्योंकि उसने इमेज को मतलब किसी भी चीज को विदाउट फिजिकल कांटेक्ट उसने इंफॉर्मेशन ले ली, आपका फोटो दे दिया, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द रिमोट सेंसिंग। देन आप अगर वैसे देखेंगे तो इन अर्लीज ऑफ 1950 और 1960 के आसपास आपके जो रियल रिमोट सेंसिंग के ऑपरेशंस है वो स्टार्ट हुए, ठीक है ना। सो इट ऑलमोस्ट गॉट 100 ईयर टू कम फ्रॉम विद द फर्स्ट फोटोग्राफ टू द देन प्लेन एंड देन योर सैटेलाइट। 1971 में पहला सैटेलाइट छोड़ा गया, ठीक है ना, दैट इज अ लैंडसेट 1 व्हिच इज कॉल्ड एज अ लैंडसेट 1, जिसकी ये इमेज है जो 1973 की ली गई है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो तब जैसे आप भी यूज करते थे, मोबाइल यूज करते थे कुछ सालों पहले, ठीक है ना, अभी भी यूज करते हो। तो पहले था कि 3 मेगापिक्सल है, चार, पहले डिजिटल कैमरास थी, फिर 4 मेगापिक्सल आ गया, फिर 8 मेगापिक्सल आ गया, फिर 16 आया, फिर चाइना वालों ने निकाला 12 15 कैमरा देने लगे आपके मोबाइल में, है ना, जो नहीं है वो भी दिखेगा, ठीक है ना। तो आपका क्या है कि विथ एडवांस टेक्नोलॉजी यू कैन हैव द एडवांस सेंसर इन मोबाइल। लाइकवाइज with the advancement in these cameras, your sensor, all this satellite is also again updated, but first one is on a started on a 1972 is get launched, and your image is first coming as in 23 July 1973. So this is some of the in between बहुत सारी चीजें हुई जिसको मैं मतलब इतना important नहीं है, as it is a history that photograph taken from by the kites, and this is a means आप जानते हो कि when you are आप अभी बीएससी में आए हो या एमएससी में आए, तो आप एकदम नहीं आए, ठीक है ना। आप 10th किए, 12th किए, फिर बीएससी में आए, उसके पहले आपने 10th के पहले प्लस मतलब 5th किया, 6th किया ना, ऑल दिस वन। तो ये डायरेक्ट नहीं आए ना आप, तो ये जब आप आए यहाँ तक तो इसके लिए एक प्रोसेस है। तो हम भी रिमोट सेंसिंग में जो आज के लिए पहुंचे हैं, वॉट एवर एडवांसमेंट्स वी हैव टेकन टिल नाउ, सो दैट इज हैविंग अ कमिंग थ्रू द प्रोसेस। तो उसमें बहुत सारे फेल्यूर भी हुए। सो यू नो दैट रिसेंटली लास्ट ईयर आई थिंक आवर चंद्रयान मिशन इज गेट फेल बिकॉज ऑफ द सम जो उसकी ड्रॉप ये हुआ था, आपका ड्रॉप मतलब जो लॉन्चिंग हुआ था वो थोड़ा सा हार्ड लॉन्चिंग, मतलब वो हुआ था, सॉरी उसको क्या कहते हैं, जो नीचे आता है, ठीक है ना, लैंडिंग, ठीक है ना, दैट इज नॉट अ सॉफ्ट लैंडिंग, दैट इज अ हार्ड लैंडिंग हुई उसकी। तो बिकॉज आपने वहां पे सब सिमुलेशन से तो कर लिया, ठीक है ना। स्टिमुलेशन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर एग्जांपल देना हो तो आपको 4 व्हीलर चलाना है, ठीक है ना, आपको 4 व्हीलर चलाना है। दूसरा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप कौन सा गेम खेलते हो सब लोग, वो उसमें बंदूक बंदूक से मारते हैं, वो बैन हो गया था इंडिया में, क्या नाम है उसका, तो है ना, तो यस, पबजी गुड। तो पबजी गेम था या आपका कार का है? तो अब पबजी वाला एक आधा उसको कोई उसमें, मुझे तो मैं तो आज तक लाइफ में नहीं खेला, लेकिन बताते हैं लोग पबजी में अगर एक आधे को बहुत ज्यादा कुछ मिले हैं, मेडल्स मिले हैं, या उसने बहुत ज्यादा पार कर ली है लेवल्स, लेकिन सेम बंदे को अगर हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे भेजे तो कैन ही परफॉर्म? नो, बिकॉज एक्चुअल में जब कंडीशन होती है तो इसलिए सरफेस भी है मार्स के या मतलब इसके आपके जो भी अलग अलग हमने सैटेलाइट अभी तक भेजे हुए, अलग अलग आपके इसमें अलग अलग ग्रहों पे जो भेजे हुए हैं,
सो कंडीशन ऑफ देयर यू डोंट नो एग्जैक्टली, ठीक है ना, कितना वहां पे टेम्परेचर है, कितना आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कितना आपका विंड है, एंड ऑल दिस वन यू डोंट नो एग्जैक्टली, यू ओनली गेट स्टिमुलेटेड कि इतना होगा, इतना है, और इट कैन बी चेंज बिकॉज अर्थ का भी आपने आज का लिया, और जब आपको अगर आपने अगर एक आपको शादी भी करनी है और आपने आज का टेम्परेचर और प्रेशर ये ले लिया रेनफॉल का, और आपको करनी है 4 महीने के बाद, तो वो हो नहीं सकता कि 4 महीने के बाद भी ऐसे रहे. देयरफॉर all this history can very important to take forward remote sensing as a इसको सब्जेक्ट, एज अ इसको एक एडवांस टेक्नोलॉजी इसको पहुंचाने में ये पूरे जितने भी एक हमारे ये थे, क्या कहते हैं उसको, स्टेप्स थे, दैट इज ईच स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस वन. ओके, नाउ देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिमोट. कार्तिक सर, hello, is anyone there? Ma'am, यस सर, यस सर. टाइम कितना है सर मेरे पास? टाइमिंग सर 12 सवा 12 बजे तक. ठीक है, तो मैं उस तरह से थोड़ा सा इसको प्लान आउट. ठीक है, ओके, थैंक यू. ओके, सो now there is a two different type of sensing. Now we just finish with the remote sensing, then directly go to the GIS, और हम GIS में एप्लीकेशन देखेंगे मोस्टली, ठीक है ना. सो सेंसर जो है हमारे दो टाइप से होते हैं, एक तो एक्टिव सेंसर और एक है पैसिव सेंसर. इसको सिंपल आपको समझना है तो एक्टिव सेंसर ये है कि आपने क्या हुआ कि आपने एक इमेज ली है, ठीक है ना, आपने एक इमेज ली है जिसमें मोबाइल का आपका फ्लैश लाइट ऑन है, ठीक है ना, मोबाइल का आपका फ्लैश लाइट ऑन है. तो एक्टिव सेंसर इमिट एनर्जी एंड मेजर द रिफ्लेक्टेड एंड स्कैटर सिग्नल. तो जो मोबाइल का फ्लैश लाइट आपने ऑन कर लिया है वो हो गया आपके एक्टिव रिमोट सेंसिंग. वेयर एज अगर आपका मोबाइल जो है वो आपका ऑन है और आपने नेचुरल लाइट में ली, मतलब सनलाइट में ली बाहर, ठीक है ना, सेल्फी वगैरह जैसे भी लेते हैं आप, वो आपका पैसिव रिमोट सेंसिंग है. तो ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग है. मोस्टली हम पैसिव रिमोट सेंसिंग का डेटा ज्यादा यूज करते हैं. जो फ्री ऑफ द डेटा सेट है वो मोस्टली एक्टिव का, पैसिव का है. ओके, तो हम इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे. देन देयर इज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, आपका सेंसर हो गया, प्लेटफॉर्म हमने देखे थे, सेंसर देखे थे डिफरेंट टाइप के. नाउ यू हैव अ प्लेटफॉर्म लाइक you have a ground based platform, sometimes it is a ground based platform, then airborne and spaceborne, ठीक है ना. तो जो हमारे जो भी सैटेलाइट है वो मोस्टली आपके स्पेस में है. इन अर्लियर डेज समटाइम हम ग्राउंड बेस पे कुछ काम करते थे, लाइक ये जो थे पहले डिटेल रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन ली जाती थी एयरक्राफ्ट से, जब हमारे सैटेलाइट इतने एडवांस नहीं थे. देन एयरबोर्न मतलब आपने क्या किया कि एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर से डेटा लिया, जो आपका एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है. देन स्पेसबोर्न तो आपका मतलब जो भी हमारे सैटेलाइट है वो सब आपके जो है वो स्पेसबोर्न प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना. मून हमारा एक नेशनल सैटेलाइट है. तो और सेंसर हमने देखे कि सेंसर क्या है आपके, उसमें एक डिवाइस है जो कि कैप्चर करता है आपकी रिफ्लेक्टेड बैक एनर्जी, दैट इज योर सेंसर, ठीक है ना. सो दैट इज अ पैसिव सेंसर एंड एक्टिव सेंसर. देन रिजोल्यूशन, ठीक है ना, ये पार्ट देखेंगे हम, रिजोल्यूशन. सो रिजोल्यूशन क्या है आपका, रिजोल्यूशन इज एबिलिटी ऑफ सिस्टम टू रेंडर द इंफॉर्मेशन एट द स्मॉलेस्ट discretely separate quantity in terms of distance, wavelength, band, temporal and radiation. तो इसको आपको समझना है तो एक समझिए कि जैसे आपका आपने कोई भी फोटोग्राफ ले ली, ठीक है ना, मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो हाँ, जैसे तो जैसे आपको अगर रिजोल्यूशन देखना है तो आप देखिए कि ये 1 किलोमीटर रिजोल्यूशन की इमेज है एक, जिसमें आपको बस एक पहाड़ और कुछ व्हाइट व्हाइट दिख रहा है. इट मे बी अ ग्लेशियर, इट मे बी समटाइम सॉल्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उसको एनालिसिस करके पता चलना पड़ेगा. ये 360 मीटर है, इसमें आपको थोड़ा सा रिवर वगैरह भी दिख रही है, ठीक है ना. 188 मीटर में देखिए आप और थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा है. अगर आप इधर जाते हैं तो फिर 1 मीटर तक देखिए आपको इंडिविजुअल कॉलोनीज और इंडिविजुअल आपको घर भी दिख रहे हैं.
सो दैट इज अ लो रिजोल्यूशन टू द हाई रिजोल्यूशन। मतलब जब आपका रिजोल्यूशन स्पेयर्स होता है, ठीक है ना, तो उसमें आपका जो रिजोल्यूशन है वो आपका कम रिजोल्यूशन जब रहेगा तो आपको मतलब चीजें जैसे माउंटेन और वो चीजें हैं उसके लिए आपको कम रिजोल्यूशन चल जाएगा। लेकिन आपको अगर सर्वे करना है, जैसे भूलेख और भूमि अधिलेख, इनका सर्वे करना है, आपको पूरा गांव की ग्राम पंचायत के लिए कोई सर्वे करना है, तो आपको ड्रोन या उस तरह से चाहिए होगा, ठीक है ना। तो डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट टाइप के आपके एनालिसिस होते हैं, ठीक है। नाउ एज ऑलरेडी डिस्कस, लैंडसेट की एक सीरीज है सैटेलाइट की। फर्स्ट लॉन्च हुआ 1972 में, जिसका 185 किलोमीटर का एक स्वैथ था। मतलब ये कितना स्पेस और लो रिजोल्यूशन था, ठीक है ना। फिर हम आते गए, उसके बाद लैंडसेट 3, 4, 5, देन हम एडवांस होते रहे। उसके बाद आपका अभी जो हम यूज करते हैं वो आपके पास अभी तक 1 मीटर तक रिजोल्यूशन है, लेकिन हमें फ्रीली अवेलेबल 5 मीटर का है, ठीक है ना। तो ये सब रिमोट सेंसिंग की आपकी एक जर्नी है जो कि यूएसजीएस या वर्ल्ड की है। अगर हम इंडियन सैटेलाइट की अगर देखें जर्नी, तो वी गेट स्टार्टेड फ्रॉम द 1988। IRS-1A हमने लॉन्च किया था, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। देन 1991 में लीज 1 एंड 2 को हमने वो किया। उसके बाद हम अगर देखेंगे तो अभी जो हमने मतलब जो रिसेंटली 2019 कार्टोसैट 3, देन सेंटिनल एंड ऑल दिस वन, सो दिस ऑल आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सैटेलाइट विथ एडवांस टेक्नोलॉजी। आप बस ये समझ लीजिए कि आपने एक ओप्पो का या किसी का फोन लिया था बहुत सालों पहले, उसको आप चेंज करते रह रहे हैं, ठीक है ना। तो चेंज करते तो क्या करते हैं, उसमें अच्छे अच्छे फीचर्स आते हैं, अच्छे अच्छे फीचर आते हैं, रैम अच्छा आता है, रोम अच्छा आता है। सबसे ज्यादा लोग देखते हैं कि कैमरा की क्वालिटी एकदम बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी। तो ये सब आपका सैटेलाइट में भी होता है कि आपका सेंसर, आपका बैंड्स वगैरह बढ़ते रहते हैं, तो आपका सैटेलाइट की एक एज होती है। और वो उसके बाद जब हम नया सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो विद एडवांसमेंट करते हैं, तो आपको अच्छी अच्छी इमेजेस मिलती है। दिस इज व्हाट आई सजेस्ट दैट दिस 72 मीटर थे हमारे 1991 में, तो हम कहाँ पे आए 0.25 मीटर तक, ठीक है ना। कार्टोसेट का पैन डेटा सेट जो है 0.25 मीटर, इट्स अ वेरी गुड रिजोल्यूशन। 0.25 में आप बहुत सारी चीजों को अलग कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ शिवाजी कॉलेज। लीज 3 का, लीज 2 का जो मेरे पास IRS-1A का अगर इमेज होता, ठीक है ना, या 1C का होता, ठीक है, जिसका आपका रिजोल्यूशन 180 और इस टाइप से है, सो आई कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, ओके, ठीक है ना। बॉटनी डिपार्टमेंट कहाँ पे, जियोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ पे, ग्राउंड कहाँ पे, वो एक ही पिक्सल में मुझे पूरा का पूरा आपका कॉलेज दिखता, ठीक है ना। कुछ एक दो मार्कर जिससे मैं पहचानता ये कॉलेज है, आपको वही अगर दिखता। लेकिन अगर आप कार्टोसेट 3 के साथ जाएंगे और एडवांस, उससे भी एडवांस कुछ अभी जो जाएंगे रिसेंटली जो लॉन्च है, so you can differentiate your library, your canteen, where is your sports canteen or your sports ground and all this one, ठीक है ना। so that is what the advantage of having the some advanced sensor, okay। so same things with the advancement enhancing the camera, you can have the clear pictures, okay। तो मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द टाइम इज नॉट देयर। ये देखो कुछ इमेजेस है जो कि कार्टोसेट 2 की इमेज है। यू कैन सी इजीली द ग्राउंड, दिस इज अ, यू मे हैविंग द होलकर ग्राउंड, सम ऑफ यू मे नो अबाउट द होलकर ग्राउंड। होलकर स्टेडियम कहाँ पे है ना। सहवाग ने या सचिन ने 200 रन मारा था, किसने मारा था पता नहीं है, किसी ने मारा था, ठीक है। तो ये ग्राउंड्स है, देखो आप कितने मतलब क्लियर दिख रहे हैं आपको, बिकॉज दिस इज अ इमेजेस विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट सेंसर, ठीक है। इग्नोस की इमेजेस और भी अच्छी है, ठीक है। मेट्रोलॉजी के लिए भी हम सैटेलाइट यूज करते हैं। वन ऑफ द सैटेलाइट नोन एज कल्पना, विच इज कॉन्स्टेंटली हमारे इंडिया के ऊपर ही वो ऑपरेटेड है और हमें पूरी इंफॉर्मेशन देती है, वेदर फोरकास्ट और जितना भी आपका साइक्लोन एंड ऑल दिस वन विल बी गिवन बाय दिस मेट्रोलॉजी
is hundreds of website where all this data set or all this can be taken out. जैसे डेटा अगर आपको चाहिए तो एक सबसे मतलब अच्छी और बेस्ट वेबसाइट तो है अर्थ एक्सप्लोरर यूएसजीएस की है, ठीक है ना। तो आप इस पे जाएंगे तो आपको डेटा सेट, आपको खुद का अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। अर्थ एक्सप्लोरर पे जाके खुद का अकाउंट बनाने के बाद आपको आपकी एरिया का मिल जाएगा, है ना। आपको जब आप खुद की वो बनाएंगे, क्या कहते हैं उसको, अकाउंट बनाएंगे, तो आपको उसमें आधार और कुछ कुछ मांगता है, मेल वगैरह, 1-2 दिन में वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है ना। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको आपके इंडिया में और कहीं की भी इमेज चाहिए होगी तो वो आपको इमेज मिल जाएगी, ठीक है ना। ये ग्रीनलैंड है, ऑब्वियसली इट इज इन अ स्नो रीजन, है ना। So this is one of the website where you can take the this ठीक है। उसके बाद आपका एनआरएससी है, दैट इज फॉर इंडिया, ठीक है ना। तो इंडिया में जो भी आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको एनआरएससी के वेबसाइट पे, पोर्टल पे मिलेगी। इसमें आपका भुवन की भी सर्विसेज है, तो ये आपको हाइपर लिंक कर देती है अलग अलग डेटा से। जैसे भुवन का है तो भुवन भी आपको अच्छा खासा डेटा देता है, ठीक है ना। तो ऑल दिस वेबसाइट कैन बी यूज फॉर एक्विजिशन ऑफ द डेटा सेट, ओके। So all these are the advantage we already been seen. Now coming to the remote sensing has been done. Now we quickly go to the GIS and its application. So GIS is a computer assisted system to capture, storage, retrieve, and analyze and display the spatial data within a particular organization. This is a definition given by the Clark. A different definition given by the different author. A person who is following some of the different person can use any of the definition, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। So GIS क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड सिस्टम है। क्या करता है वो? कैप्चर करता है डेटा को, मतलब वॉट एवर द सैटेलाइट डेटा वी आर टॉकिंग अबाउट, कि जो सैटेलाइट डेटा है वो आप क्या करते हो? कैप्चर करते हो, मतलब लेते हो। जैसे मैंने आपको बताया यूएसजीएस की जो वेबसाइट है उसको स्टोर करते हो, रिट्रीव करते हो, और एक सॉफ्टवेयर है, अलग अलग सॉफ्टवेयर है जीआईएस के, आर्क जीआईएस है, एडास है, ऑल दिस सॉफ्टवेयर्स, एनवी है। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको एनालिसिस करते हो और उसको मैप या किसी अलग अलग तरीके के फॉर्म में उसको डिस्प्ले करते हो, ओके, उस स्पेशल डेटा को। स्पेशल डेटा मींस दैट डेटा इज हैविंग अ लैट लॉन्ग, किसकी पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है ना, लैट लॉन्ग, और उसका कुछ एक रेफरेंसिंग होनी चाहिए। सो दैट इज व्हाट द स्पेशल डेटा सेट कैन बी प्रोसेस इन अ जीआईएस, ठीक है ना। तो जीआईएस क्या है? वन ऑफ द कंप्यूटर असिस्टेड सिस्टम फॉर द कैप्चरिंग दैट डेटा, स्टोरिंग, रिट्रीव एंड एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा सेट, ओके। अब जीआईएस में होता क्या क्या है? जीआईएस में होता है, पहले क्या होता है आपका इनपुट, मतलब इनपुट कहां से आएगा आपको? जो हमने सैटेलाइट की बात की थी, है ना, वो मैंने जो आपको सैटेलाइट की बात की थी वो आपका क्या है? इनपुट डेटा है। देन डेटा मैनेजमेंट, जो आपका पीसी आप कंप्यूटर में यूज कर रहे हो वो आपका डेटा मैनेज करेगा, आपको एक फोल्डर में डालना है उसको, फिर आप वहां से उसको रिट्रीव करोगे थ्रू सॉफ्टवेयर, है ना। सो दैट इज अ डेटा मैनेजमेंट, ओके। देन मैनिपुलेशन एंड योर एनालिसिस मींस आप क्या करोगे? उसको डेटा को आप करोगे, उसको यूज करोगे फॉर द डिफरेंट एनालिसिस। लाइक उसमें स्पेशल एनालिसिस टूल है, अलग 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 टूल है, वो टूल आप क्या करोगे? यूज करोगे, है ना। वो टूल आप क्या करोगे? यूज करोगे फॉर द डिफरेंट पर्पजेस। लाइक आपको अगर वाटर डेंसिटी, वाटर का आपको निकालना हो तो आप करोगे, वाटर के लिए करोगे। आपको अगर इसका निकालना हो, फॉर वेजिटेशन निकालना तो वेजिटेशन के लिए, देन आपको एनालिसिस करके आपको एक आउटपुट मिलेगा कि आपको एरिया बता देगा कि इतना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेलघाट में वेजिटेशन कितना है, तो वो मुझे चेक करना है। तो मैं सैटेलाइट डाउनलोड करूंगा, इमेज डाउनलोड करूंगा मेलघाट की, उसमें देखूंगा वेजिटेशन कितना है, फिर उसमें कुछ ये लगाऊंगा, क्या कहते हैं उसको, डिफरेंट एनालिसिस लगाऊंगा। स्पेशल एनालिसिस में टूल लूंगा, NDVI लगाऊंगा, एक बैंड माइनस वो बैंड करूंगा, फिर वो एनालिसिस करके मुझे रिजल्ट दे देगा कि मेलघाट में अभी कितना वेजिटेशन है। सो दैट इज आउटपुट।
So this all the process is a part of the GIS processes. ठीक है ना, तो ये कैपेबिलिटीज है GIS की कि जियो रेफरेंस डेटा को इन 4 प्रोसेस में आपका प्रोसीड करता है. ओके, देन जीआईएस टर्मिनोलॉजीज अलग अलग है. आप इसको जियो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं, कोई जियो मेटिक्स कहता है, जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन साइंस. आप देखोगे कि आपकी डिग्री भी इटसेल्फ है वो एमएससी इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, कभी कहीं पे जियोमेटिक्स है, कहीं पे जियो स्पेशल सिस्टम है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, लेकिन मोर और लेस द थिंग इज अ सेम और कॉमन फॉर ऑल. ये आपकी जीआईएस के अलग अलग टाइप है. डेस्कटॉप GIS, professional GIS. So this is a different type of GIS system. This is a father of GIS, like Roger Tomlinson. This is a father of GIS. This program of India kaha Vikram Sarabhai ko, like he is a father of GIS. Okay. Then element of GIS. ठीक है ना, तो people means we, where we use this as a end user. Then hardware, मतलब आपका पीसी कंप्यूटर जो है. देन सॉफ्टवेयर, लाइक वी यूज द ArcGIS, NV and all this one. Then data, obviously you take the data set from the, like statistical data भी आप लेते हैं. Then you have software like satellite data and all. Then method means आप कोई तो भी एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, लाइक NDVI, और इसके लिए एक मेथड फॉलो करते हैं कि इस बैंड से इस बैंड को माइनस करना है, इस बैंड से इसको ये करना है. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द और मेथड ऑफ द दिस GIS. So this is all are the combinedly known as the element of GIS. तो element of GIS और component of remote sensing, ये दो चीजें आपको याद रखनी है for the fundamentals. Okay. So what GIS can do? GIS can identify the location where it can be. क्या है वहां पे, ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है किसी भी चीज का, मॉडल्स, बेस्ट रूट क्या है. तो ये कैपेबिलिटीज है जीआईएस की, वो बहुत ज्यादा है. इसको एक्सप्लेन करने के लिए काफी टाइम लगेगा, लेकिन जीआईएस कैन डू अ वंडर्स. ओके, जीआईएस काफी चीजें कर सकता है जो हमारे लिए एज ए ह्यूमन, एज ए मैन्युअली हमको नहीं है पॉसिबल. ठीक है. सो इसको मैं थोड़ा सा अभी फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ बिकॉज ऑफ द टाइम. सो वी हैव मोस्ट ऑफ द जीआईएस सॉफ्टवेयर लाइक ArcGIS, जो कि काफी यूज होता है. ठीक है ना, तो इसके काफी वर्जन है, ArcGIS 8, 9, 10 एंड ऑल दिस. सो EDC है, देन यू हैव NV है, ER Mapper. दिस इज ऑल आर द जीआईएस सॉफ्टवेयर. ठीक है. ये कुछ वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्री क्लासेस मिलती है. करियर जीआईएस में काफी अच्छे हैं. You can see the vacancies every day coming out with the GIS, like cartographic as a GIS analyst, as a data analyst, computer programming, आपको GIS डेवलपर, GIS इंजीनियर, GIS एनालिस्ट, जियो स्पेशल एनालिस्ट, ये सब आपकी एक वैकेंसीज निकलती है. आपके सर भी देखो डालते रहते हैं, पौनिकर सर भी, आपके मैम भी, आपके ये वैकेंसीज जो है. तो इसमें प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट में काफी अच्छी वैकेंसीज है. सो तो विद द knowledge of your core subject like geology or whatever subject you have, with the knowledge of your core subject and advancement in the your subject, you can having a very good position in any of the organization. ठीक है. So some premier जो आपके ये है एम्प्लॉयर है, जो आपको जॉब मिलेगा जियो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, लाइक यूनिवर्सिटीज है, सैक है, हर स्टेट में सैक है, MR सैक, लाइक एनी ऑफ द दूसरे भी है, BIT है, BIT मेसरा, NRSC है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, NRSC है, RR सैक, इसरो, ICAR, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी. आजकल तो जितने भी आपके जो सर्वे और इससे रिलेटेड जितने भी है वो उसमें सब में आपका यूज होता है, लाइक आपका जो GSDA और सब में ही यूज होता है GIS. सो देयरफॉर GIS का, क्योंकि बिकॉज द सब्जेक्ट इज कमिंग फ्रॉम द, थोड़ा सा लेट से स्टार्ट हुआ है बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में. सो मोस्टली द वैकेंसीज आर प्राइवेट और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है. सो इट धीरे धीरे ये थोड़ा हो रहा है कि आपका जो इन्फॉर्मेटिक्स में भी जो वैकेंसी आ रही है वो परमानेंट पोजीशन वगैरह आ रही है, लेकिन उसमें भी आपका हैंडसम पैकेजेस होते हैं. सो यू कैन, इफ यू हैव अ नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट एंड इफ यू रन द सॉफ्टवेयर प्रोफाउंडली, सो प्रोफिशिएंसी, सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट इन जीआईएस. ठीक है ना, थ्योरी से ज्यादा इसकी सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी को ज्यादा ध्यान और तवज्जो देनी चाहिए आपने.
तो ये आपकी कंपनीज है जो आपको जॉब देती है, ठीक है ना। This is a recently published book by me and one of my co-author, Bhutesh sir. So where we use the geospatial technology for integrated water resource management, means जो हमारा ग्राउंड वाटर और वाटर मॉडलिंग है, तो कहाँ पे मिल सकता है, उसके लिए कैसे कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं. So this book is published in a Springer Nature. So this is an edited book volume, okay, recently coming up. और अगर आप उसके बाद ये पब्लिकेशंस है, तो इसमें हमने क्या किया है कि मैं अब थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ. What we have done in the different applications like geospatial technology, that is a book what I discussed actually. Then application of remote sensing and GIS for limnological studies, means lake में इसको कैसे यूज कर सकते हैं lake studies के लिए. Then prioritizing and quantitative assessment of your one of the धुंडी सर, दिस इज इन हिमालय, तो उसको गढ़वाल हिमालय में हमने स्टडी किया था. देन ट्रेन एनालिसिस किया वनगंगा बेसिन का, ठीक है ना. देन एनालिसिस ऑफ लैंड यूज लैंड कवर, मतलब जो चिपलून में फ्लड आया था उस पर हमने काम किया कि इसका क्या रीजन था, तो वी कैन फाइंड दैट कि क्या क्या रीजन थे. तो जो हमारा रिवर का जो चैनल था उसमें काफी इंक्रोचमेंट हुआ, दैट इज व्हाट. देन मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ रिवर बेसिन. देन वेजिटेशन इंडेक्स, ये अकोला की स्टडी थी जिसमें नॉर्मलाइज्ड एनडीवीआर एनडीडब्ल्यूआई निकाला था. देन डिफरेंट स्टडीज है जिसमें हमने डिफरेंट पैरामीटर डिफरेंट, जैसे एक क्रॉप हेल्थ असेसमेंट किया था सार डेटा से. तो यू कैन सी दैट कि ये जितने डेटा, मतलब जितने पेपर है इसमें सब इसमें डिफरेंट डेटा, डिफरेंट टेक्निक मेथड यूज किए. तो डिपेंडिंग अपॉन आपको एक ऑब्जेक्टिव बना के उसका एक करके, मतलब डाउनलोड करके डेटा करके उसको आप कर सकते हो सामने प्रोसेस, है ना. ऐसा नहीं कि एक आप यूज करो प्रोसेस और डेटा. यू कैन यूज अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट डेटा सेट फॉर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव. इसमें काफी पेपर आप देखोगे तो मेरे स्टूडेंट के हैं जो कि एमएससी में ही थे. Some of the student are from alumni of your college also, like Abhijit Ambarkar and Kunal Chinche, Priyanka Patil and all this one. They are the alumni of your college, or they are student of Karthik sir actually. Sir is having taken the initiative and sent them to the Jaipur with me earlier when I was in Jaipur. So all they are placed now and having good job in their hand. So job अच्छे है, कोई problem नहीं है. Just a thing is that you need to proficient in your software, okay. So इसके साथ ही मैं I think time is enough now. So different type of things are there. जैसे हम लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक की स्टडी कर सकते हैं. All type of disaster can be studied by the GIS, okay. Then military defense के लिए तो इसका काफी एप्लीकेशन है. बॉर्डर, और इस पे हम लोग देखते हैं काफी मूवीज में भी आप देखते हो कि सैटेलाइट और रडार सिस्टम वगैरह आप पूरा एक्टिविटी मेजर करते हो किसी भी टेररिस्ट या उसी एक्टिविटी की, ठीक है ना. मे भी आपने पोखरन वगैरह मूवी देखी हो तो उसमें आप देख सकते हो. जैसे फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी है, तो आपका कितना है 1972 में, फिर अभी कितना है, ये आप सब सैटेलाइट इमेज से कर सकते हो. देन अर्बन प्लानिंग के लिए भी यूज होता है. तो जीआईएस इज having a means n number of application, बहुत applications है उसके. आपको कहाँ पे आपको expertise आपकी डेवलप करनी है, that is depend upon your previous knowledge. आपका जो previous knowledge है, आपका जो मतलब बेस है, उसको रख के आप करेंगे तो that will be good for you, okay. Then site suitability analysis भी है. जैसे site suitability में तो आप कुछ भी कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अमरावती में एक डंपिंग यार्ड या डंपिंग साइट को प्रपोज करना है, तो कहाँ पे करोगे, तो उसके लिए आपको पैरामीटर देने पड़ेंगे. तो लाइकवाइज आप रोड पे बीच सिटी में तो नहीं कर सकते, ठीक है ना. आप रिवर के बाद में बाथरूम में भी नहीं कर सकते, बिकॉज वो गंदी हो जाएगी रिवर. सो यू नीड सम बैरन लैंड वेयर डोंट हैव दिस मच ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टर, ठीक है ना. बिल्ट अप एरिया के बाद भी नहीं दे सकते, लोग परेशान हो जाएंगे. सो
ऑल दिस वन, अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को पॉइंट आउट करना है तो कहाँ दे सकते हैं आप, मॉल के पास देना है या कैसे देना है. सो ऑल दिस ओवरले एनालिसिस कैन बी डू फॉर द साइट सुटेबिलिटी एनालिसिस, है ना. ब्लड बैंक कहाँ पे होने चाहिए, हॉस्पिटल कहाँ पे होने चाहिए, है ना. तो ये जो है ये पूरा आपका जीआईएस जो है एक वंडर कर सकता है इसमें आपका विद द सेम डेटा सेट, ठीक है ना. सो thank you all for listening patiently and giving me opportunity for to express myself, whatever the little knowledge about the remote sensing and GIS I know. I am also learning, and हम लोग कुछ नया नया कुछ करते रहते हैं, और कुछ जैसे ही कुछ प्रॉब्लम दिखती है तो उसको कुछ तरीके से GIS एंड रिमोट सेंसिंग के हेल्प से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. ओके, so with this I would like to thank you all for patiently listening. That's all from my side. If you have any question and all this one, it's now forum is open for any question and discussion. Over to Thank you, sir. Now it's time for question answer session. If you have any queries, you can ask. अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप सर से पूछ सकते हो, आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा. One more things I forget to share actually. एक वेबसाइट, एक एजुसेट का एक प्रोग्राम चलता है. आई डोंट नो कि आपका रजिस्टर है कि नहीं. अगर नहीं हो तो हम लोग इसको करेंगे रजिस्टर करने की कोशिश. IRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग एक प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है ना. तो इसमें क्या है, आपके कोर्सेज होते हैं रिमोट सेंसिंग एंड बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड ऑल दिस कोर्सेज आर देयर विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना. फ्री कॉस्ट होता है इसका, और ये आपको इसरो और इसके साइंटिस्ट से आपको ये होता है, आपको एक सर्टिफिकेशन भी मिलता है. तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो. टेकिंग द यूर एलिजिबिलिटी, उसमें सिर्फ ये होता है कि ग्रेजुएशन होता है, तो पीजी वाले लोग कर सकते हैं मोस्टली, है ना. तो इसको भी आप थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए. कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप पूछ सकते हो विद दैट टाइम. ओके सर, यही बताना था थोड़ा. Good. Sir, what is the scope of this remote sensing and what? What is the Scope of this remote sensing, sir? Okay. Taking knowledge of it. तो देखो काफी है. जैसे आजकल जो भी हमारी जितनी भी स्टडीज हो रही है, मतलब आप अगर जॉब के लिए पर्सपेक्टिव से देखो तो काफी अच्छा प्राइवेट में वगैरह काफी अच्छी वैकेंसीज आ रही है रिमोट सेंसिंग की. उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, अगर आप रिसर्च और इसके लिए भी देखो तो काफी स्कोप है, क्योंकि जो भी स्टडी जो अनएक्सप्लोर पार्ट है अर्थ के, वहाँ पे रिमोट सेंसिंग के थ्रू आप जा सकते हो. लाइक आप अगर रिसर्च में जाना चाहो तो आप देखोगे कहाँ कहाँ है कि जियोलॉजी की स्टडी नहीं हुई, वहाँ की जियोलॉजी अभी तक पता नहीं है, ठीक है ना. या तो ग्लेशियल कोई है जो भी स्टडी नहीं हुआ है, तो आप उसमें जा सकते हो, ठीक है ना. तो और अगर स्कोप, अगर आप जॉब के पर्सपेक्टिव से स्कोप की बात करें तो दो तरीके से आप उसकी तरफ देख सकते हो. इंटर्नशिप, या इसमें जो लास्ट सेमेस्टर में आपकी इंटर्नशिप वगैरह होती है, तो आप चाहे तो किसी कंपनीज में ज्वाइन कर सकते हो जो एग्री बेस्ड और बाकी जो कंपनीज काम करती है उसमें ज्वाइन करके आप कंटिन्यू कर सकते हो विद द स्टाइपेंड, जो कि आपको मोस्टली एब्जॉर्ब कर देती है. या तो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी जा सकते हो. इसरो के काफी सारे है, MRSAC है, इसरो देहरादून है. इसमें जाके आप किसी साइंटिस्ट के साथ काम कर सकते हो, तो आपकी एज अ रिसर्च, एज अ साइंस आपकी एक लिंक लग जाती है. तो दोनों तरह से आपको स्कोप को एक्सप्लोर कर सकते हो आप, कि आपको किस तरह जाना है. बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन यू. जैसे मुझे था कि मुझे टीचिंग या रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट था. आई डोंट वांट टू गो इनटू द ऑयल फील्ड एंड अदर थिंग्स. तो मुझे पता था कि मुझे इसमें जाना है, तो आई डू विद द रिसर्च एंड ऑल दिस वन. आपको अगर लगता है कि आपको रिसर्च में जाना है तो आपके लिए काफी स्कोप है उसमें, कि आप फिर रिसर्च में जाना है तो किसी अच्छी जगह से, या मतलब आपका डेजर्टेशन या जो करोगे तो अच्छा करो, उसमें कोई पेपर वगैरह पब्लिकेशन की कोशिश करो, तो आपके लिए काफी स्कोप वायबल रहेगा, काफी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ठीक है. Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर. सो आई थिंक अभी किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है. थैंक यू फॉर डिलीवरिंग
an insightful guest lecture on remote sensing and GIS. Your expertise and ongoing presentation have greatly enriched our understanding of this crucial field. We truly appreciate your time and efforts in sharing your knowledge with us. Now I would like to call Mr. Saurabh Pawnikar sir for the vote of thanks. Thank you, sir. Thank you, Karthik sir. Thank you for providing me this opportunity to give the vote of thanks. Firstly, I offer my humble homage to our founder president, Sri Shivaji Education Society Amravati, Dr. Punjab Rao Alais Bhausaheb Deshmukh, and Santa Gadge Baba. I am grateful to Principal Dr. G.V. Korpe, Sri Shivaji Science College Amravati, for permitting to organize this enlightening guest lecture on celebration of National Remote Sensing Day. I extend my heartfelt thanks to Dr. S.P. Ingole Madam, IQSC Coordinator, for her constant support and motivation to organize such guest lectures. I express my sincere gratitude to Dr. Pranay Divte sir, Assistant Professor from Department of Geology at the School of Basic and Applied Science, MGM University, Sambhajinagar, for delivering a wonderful guest lecture on basics of remote sensing, GIS, and its application. So after your lecture, I'm assured that all the BSc Geology and MSc Geoinformatics students are now more aware of the opportunities in remote sensing and geoinformatics field. Thank you, sir. Special thanks to our convener, Dr. M.M. Deshmukh. It's her constant effort due to which we can organize such wonderful events. I extend my appreciation to all members of the organizing committee, including Mr. Karthik Tiwari, Ms. Aishwarya Uke, Mr. Gaurav Kadu, and our beloved Sanjay Salbade Kaka. All of you make our department a good team, which is an essential requirement for organizing any program. Last but certainly not least, I extend my gratitude to our enthusiastic students who actively participated and have shown keen interest in today's guest lecture. Thank you once again and have a wonderful day ahead. At the last, with the permission of convener, I would like to conclude today's program here. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. We're looking forward for some visit to the department and having a more face-to-face conversation next time. अभी देखते हैं जब next time कभी होता है आना. Sure, sir. Sure. And we'll also like to collaborate in research with you. Yes, yes, sure, sure. करेंगे हम. Thank you, sir. Okay.